Hello everyone, welcome back. Let's start with the new session. In this session, we are going to discuss about how the module federation works. Right, so there are the couple of frameworks available in the market, right, to achieve the micro front-end architecture. Initially, in the API side, if I will talk about, we build the API on the basis of the monolithic architecture, right? The everything is in the same repo, same code base, right? But slowly, we shifted from monolithic to the microservice architecture, where we created a separate APIs. We created a separate repos to keep the separate code, right? So it makes a deployment or the build independently is being started being handled, right? The same is being applied to the front end side as well. Initially, the front end was based on the monolithic architecture, where you created your front end application in the same code base. Let's take an example. You are building the e-commerce application where you are keeping your home page, product listing page, product detail page, card and checkout page in the same code base, right? But now we are shifting from this monolithic architecture to the micro front-end architecture, where we are creating a separate micro front-end apps for each and every module, right? It purely depends on you how much feature that you want to keep in a single micro front-end, right? So there are the couple of approaches available in the market. As of now, there is a module federation that we are going to talk today, right? But there are the other framework, which is a Pyral framework, which is a very famous one. If you want me to create a session on that, I will definitely create it. In the Pyral framework, there is an app shell, there is a micro front-end architecture. Once the micro front-end build, right, we store the micro front-end chunks into the S3 bucket, right? Then your micro front-end feed service that is based on the Node.js, right, actually calls your chunks, and that API, which is MFE feed service, is being invoked inside the app shell. If you want this kind of framework where you are using the AWS, where you are using the S3 buckets, where you are using the Node.js based API, you are creating the app shell in the host. You are creating the micro frontends. Mention in the comment. I will create a separate session for that as well. But now the today agenda is to talk about how micro front-end architecture works under the module federation, right? In the module federation, that is a very simple one. You create the app shell or the host file, you create the host application, remote application, or child micro frontends, right? You create the Webpack config file inside the micro frontends and the parent application, and your child micro frontend application actually expose a URL which is being called inside your parent application. So this is a very simple, now you can see my screen, right? And the quick start guide, this is a very simple. They mentioned that before reading this guide, please go through the setting up the environment. Don't need to bother about this. I will create each and everything within a few minutes, right? We will create two projects. One would be on the app shell, one would be your remote app, right? Remote app will be the shared header which will be called inside your parent application. I will tell you each and every single thing. So let's take an example. Just so now what we are going to cover, we are going to cover what? Okay, micro front-end आर्किटेक्चर, राइट? इस माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर के अंदर हम आज कवर करने वाले हैं मॉड्यूल फेडरेशन, राइट? अब इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं? हमारी क्या होंगी? हमारी दो एप्स होंगी, राइट? वन कौन सी होगी? ये मेरी होगी होस्ट ऐप. सेकेंड कौन सी होगी? मेरी रिमोट ऐप, राइट? ठीक है. रिमोट ऐप क्या करेगी? एक यूआरएल एक्सपोज करेगी, ठीक है? जो यूआरएल एक्सपोज करके यहाँ पे एक हमारा हम क्या करेंगे? मॉड्यूल फेडरेशन का मॉड्यूल, मैं फेडी लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक प्लगइन होगा, ठीक है? इस प्लगइन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? अपनी वेबपैक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ठीक है? which will actually expose your application URL and that URL will be called by your host app. So इसका फ़ायदा क्या है कि आप क्या कर सकते हो? अपनी separate CI/CD फाइल लिख सकते हो, right? Which can help us to build each and every application independently, right? अब कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि मेरे को अगर मैंने एक कोड बेस में कुछ चेंज किया है, ओके, मेरे को मेरी पूरी बिल्ड होगी. नहीं, अगर मैंने अपने चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड के अंदर कोड को चेंज किया है तो वही बिल्ड होगा. अगर मैं अपनी
पैरेंट एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंज कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी पैरेंट एप्लीकेशन बिल्ड होगी. सो दिस इज अ बेसिक बेनिफिट ऑफ द माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर एंड इट इज़ वेरी फेमस वन, राइट. आजकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, उसमें मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट, स्क्वाड्स, पॉड्स विच यू कैन कॉल इट, राइट. सो दे कैन इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. देयर इज़ अ नो कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल्दो आई अग्री. सो हमें सेपरेट CI/CD बनानी पड़ती हैं, कपल ऑफ areas that we need to take care of that, but बहुत ज़्यादा benefits भी हैं. So let's start with the session. Okay, so we have already discussed about what exactly the module federation, what is the use case of the module federation, why we will choose the module federation. Even in your organization, if someone is asking to build any UI application or the framework, then you will definitely choose the module federation because it's provide the capability to implement the micro front-end architecture, right? So let's jump into the coding part of this session. I already tell you that we are going to create the two application. One is the remote application and one is the host app, right, which you can call it as an app shell as well. So let's start building the application, right. Let me open my terminal. Okay, so this is the directory which I have already created, which is a yt-mf-app. Okay, so what we need to do is let me create a two folders inside that. This is an empty directory. I'm just going to create a mkdi-app shell, right. Now I'm going to create the another directory which is shared app. Shared, you can call it as a shared header as well. Okay, so these are the two apps that we have created, which is an app shell and the shared header. Let me clear it. Let me go inside the app shell. Now I'm just going to create a package.json inside it. So what I'm going to do, npm init-y. Okay, so let me do dir. It's a package.json. Now I'm going to install the couple of packages. What packages that I'm going to install? Let's see. Npm install react and react dom. Now there are the other packages which I'm going to create is npm install TypeScript, Webpack, Webpack CLI, Webpack dev server, TS loader, HTML Webpack plugin, types, React DOM. If you are not much aware about what is the use of Webpack CLI, Webpack dev server and the TS loader, you can watch my another video which is a Webpack video 1. I have created the video on how the Webpack works thoroughly. You can learn the Webpack from that video. You can even see the roll-up one as well, how to build your code, right. So in that video I explained every single step, every single loader, how the chunking works, how split chunk works. So everything that I have thoroughly explained. So in this session I'm not going to write the Webpack file from the scratch. We will just paste it over here and I will explain every single line of Webpack config file which is used for the module federation. So now we have installed the packages. Now what we are going to do is, I'm just cd ... let me open the VS Code for that. Okay, okay, so now we have the yt-mf app. There is a two folder, one is an app shell and the second one is in a shared header one, which is an empty one, right. So what we can do is we can follow the same step in the shared header as well. Clear cd shared header dir, what was that, npm init-y. Okay, now npm install react and react dom. Now this one. Okay, so now we have installed the packages inside both of the folders. Okay, now I'm just going back here, dir cd app shell. Okay, let me go back here. Now in the app shell folder I'm going to create the folder called source. In the source there will be the public folder. In the public folder there will be a file called index.html. In the source there will be a file called index.tsx, right. Okay, in the index.html what I'm going to paste is, right, there is a stuff. This is a simple HTML where I'm passing dev ID root. You know that if you work with the React application, then it's mandatory to create the ID as a root, which will be accessed using the document.getElement by ID. Then that container should be passed into the create root method, which is being provided by the React, right? So these are the things that I'm just going to do. In the index.tsx, what you are going to do is the same thing that I already explained you. What you need to do is you just need to create a get
access this root ID using the get element by ID, pass your container inside the React root, which you will get through the React DOM/client, right? Now you need to pass the root.render and pass your app component. I didn't build it, so let's build the app component, right? It's a very smaller one, app.tsx. Let me share the code of the app.tsx. So okay, so this is an app.tsx. Ignore this line as of now. Okay, so this is a simple component where I'm using the suspense and calling the header app. So think like that. Header app is basically the child micro front end which we didn't create it. We just created the folder structure, which is a shared header one. We will expose this shared header from the Webpack config file of this shared header, right? As of now, ignore this line. We will come back to this line soon. Okay, in the index.tsx. Okay, what's the error? Okay, /. Okay, app. Okay, so this is done. Now what I'm going to do is I'm just okay, instead of doing that, same thing I will do here first. I'm just going to create the source folder. I'm just going to create the public folder over here. I'm just creating the index.html over here. Okay, now in the source folder, what I need to do is I just need to create first of all index.tsx, right? Then I created a folder. Okay, the source folder, I need to create an index.tsx, then header app, header component, whatever you want to call it, header app.tsx. Now the new file is a bootstrap.tsx. Okay, this is a simple file. Okay, in the index.tsx, what I'm going to do is I'm just doing a small thing. Okay, I'm just importing this bootstrap. In the bootstrap, what we are going to do is, in the bootstrap there is a same code, right? We are accessing the root, right? This ID we have already defined, or we can call it as an index.html. We can get it from here. In this index.html, what we did is we created the root ID for this micro frontend as well, for the shared header one. And in the bootstrap.tsx, we are accessing this root ID, passing it inside the create root, then passing the header app inside the render method, right? Now this is the basic things that we do for every React application, right? So no need to type everything again and again. So you can watch my previous session if you need to understand how React works, how Next.js works, how to build a couple of leaderboard chat applications. You can access it, right? There is a Nest.js specific playlist as well. If you want more session on the Nest.js, do let me know. I will create a detailed session on the Nest.js as well, related to the JWT one, how the authorization authentication works. So do let me know these things in the comments. Okay, so in the bootstrap.tsx, I have the header app. So basically the header app, it will be the very simple component. So we are just try to understand how this micro frontend works. We are not doing the fancy stuff here. Okay, I'm just going to create the fancy header for you. Okay, that is a secondary thing that you can generate using even the Copilot as well, right? So that is not required, right? So this is a header app component. I call it as a remote app, or you can call it as a header app as well, right? Where I returning a simple div which will showcase you, hello, I am from the app to remote, or you can call it as a hello from shared header. Okay, share header, which is a remote app, right? So now we are done in the bootstrap. Okay, this is a header app.tsx. This is a bootstrap file. This is an index.html. So we are done with the couple of things, right? Now it's time to do the actual things for the module federation. I am just going to create the Webpack config file, webpack.config.js. Okay, in the Webpack config.js, what I need to do is I will just copy it here. I will explain everything for the Webpack config file for both of these assets. One is for the app shell and another is for the shared header. Now I need to create the Webpack config over here as well, webpack.config.js. Let me paste the Webpack config of this file. Okay, one thing that we missed it, as this is the TypeScript, we are using the app.tsx, my fault. I am just going to create the ts config for that, right? tsconfig.json, right? For the ts.config.json, I'm just pasting it over here. Okay, now for same I need to create the file here as well, tsconfig.json, right?
Now paste over here. Okay, so these are the ts config json file for both of the project. Okay, so if you are working within a TypeScript project, then definitely you need this. Okay, so right now global.d.ts is not in our project. I will tell you what is the use case of global.d.ts. In the app.ts, now you can see that, okay, so this is a shared underscore header. Now let's jump into the webpack config file first. If we will understand the webpack config file thoroughly for both of these assets, then module federation is not a tricky task. It's a very easy task. The complexity comes when you try to think about, okay, how I will build this code on the environment, or maybe when you automate your build process through the CI or CD, then there is some complication comes, which we discussed, right? Which we also discussed in the maybe in the next session or maybe in this section. So we will think of it, right? As of now, let's understand what is the webpack config file of this app shell. Okay, so step by step we will understand. First I'm requiring the path, then I'm using the webpack plugin, which you know that. Okay, then I'm using the module federation plugin, which I'm requiring from webpack container. Define plugin is basically a plugin which you can use. You can pass your remote header, remote shared header, or maybe any variables or the environment variables. You can pass it to the define plugin, which is available to your web application, right? You can access this remote share header in your code base as well, right? If you will set it inside the define plugin, right? So this is basically the remote shared header URL. Think like that. You have the application. One is the parent application. Okay, simple में समझते हैं. This is an app shell. Okay, you can call it as a host app as well. किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको पेरेंट एप्लीकेशन बोल देते हैं, किसी में हम इसको ऐप शेल बोल देते हैं, किसी में हम इसको अपनी होस्ट ऐप बोल देते हैं. और जो आपकी चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड्स हैं, विच कैन बी द नंबर ऑफ, राइट? सपोज करो आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपका एक प्रोडक्ट लिस्टिंग की एप्लीकेशन होगी, एक आपकी पीडीपी पेज की होगी, एक आपका चेकआउट का फ्लो होगा, पेमेंट का फ्लो होगा, सो कपल ऑफ कार्ट का फ्लो होगा. सो अलग अलग टीम्स आपके अलग अलग माइक्रो फ्रंट एंड बना सकती है. सो देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रिमोट ऐप्स, राइट? इसके आगे हम ऐप्स कर देते हैं, ठीक है? रिमोट ऐप्स होती हैं. अब हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, जो मेरी वेबपैक कॉन्फ़िग फाइल थी, वेबपैक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये वाली वेबपैक कॉन्फ़िग ऐप शेल की, ये क्या चीज़ है? जब भी आप कोई भी माइक्रो फ्रंट एंड बनाओगे, राइट? अभी क्या बना रहे हैं हम? शेयर्ड हेडर मेरी एक क्या है? एक चाइल्ड ऐप है, चाइल्ड माइक्रो MF है, माइक्रो फ्रंट एंड, राइट? HEADER, ओके? चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड है, राइट? अब ये चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड मैंने बना लिया, मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया. अभी हम इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं मान के ये चलता हूँ कि मैंने लोकल पे इसको रन कर दिया. कहाँ पे रन कर दिया? मैंने इसको रन कर दिया अपने, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वेबपैक कॉन्फ़िग के अंदर, एक काम करते हैं, सारी फाइल्स को ना बंद कर देते हैं. ओके, सो इट्स क्रिएटिंग द कन्फ्यूजन, राइट? सो दिस इज द वेबपैक कॉन्फ़िग. ओके, सो आई एम एक्सपोजिंग माई चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड इनटू 300 पोर्ट, राइट? अब मैं उस माइक्रो फ्रंट एंड को ऐप शेल के अंदर तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, तभी तो ऐप शेल को बताएंगे, ओके भाई तेरे अंदर हम अपने हेडर की ऐप को रेंडर करेंगे. मेरी एक पैरेंट एप्लीकेशन है, उस पैरेंट एप्लीकेशन के अंदर जो मेरा हेडर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो मेरे एक दूसरे माइक्रो फ्रंट एंड से आ रहा है, वो किसी दूसरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन माई टीम वी आर टेकिंग केयर ऑफ द shared module which is an app shell parent application. तो अदर जो टीम है जो चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड बना रही है, वो बोलेगी ओके मैंने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है, तुम अपनी एप्लीकेशन के अंदर, पैरेंट एप्लीकेशन के अंदर हमारे माइक्रो फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर लो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाई वी आर पासिंग दिस हेडर http:/localhost:3000 remote-entry.js URL here. process.env में सेट करने का रीज़न ये है क्योंकि आप जब इसको डिप्लॉय करोगे कहीं पे, तब आप इस URL को लोकल होस्ट से एक्सेस नहीं करोगे, तब कोई URL होगा जो आपको अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट करना पड़ेगा. व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, अभी बात कर लेते हैं, आप अपने गिटहब के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इसको सीक्रेट्स में जाके रख दो, CI/CD के अंदर इसको रीड कर लो, फिर इसको सेट करवा दो. जब भी आपकी वेबपैक कॉन्फ़िग रन होगी, राइट, आपने डिफाइन प्लगइन यूज़ किया है, कंपाइल टाइम पे आपको ये रिमोट शेयर्ड हेडर मिल जाएगा ताकि आप इसको एक्सेस कर पाओ अपनी एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है, अब आई होप दिस लाइन इज क्लियर टू यू. वंस वी विल डू द CI/CD और द
when we will do the process of building this application through the CI/CD, then you will understand more. Okay, ये environment variable मुझे कहाँ से आएंगे. So ये पाइपलाइन में है कि मैं इस जो ये हमारा माइक्रो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, व्हाट वी डू इज वी विल क्रिएट अ पाइपलाइन फॉर दिस, वी विल बिल्ड दिस कोड, वी विल डिप्लॉय दिस कोड to the Netlify through the GitHub, right? So the everything is under the pipeline, so we will do it, right? So in the module.export I am passing the entry file, which is index.tsx. We are doing nothing, we are just passing the root container to the create root and passing our app component to the root.render, right? Nothing else. Okay, in the Webpack config, next step is like if the mode is a production, then go with the production build, and otherwise the development, you are setting the mode over here. Dev server would be the 3001, and for the child micro frontend you are using the 3002, right? इसमें आउटपुट है, इसमें आपका डिस्ट फोल्डर बन जाएगा, राइट? योर डिस्ट फोल्डर विल बी क्रिएटेड हेयर, राइट? एंड यू आर पासिंग द रिजॉल्व वेयर यू आर पासिंग द alias as a react and react DOM, where to pick the react and react DOM. It will look into the node modules folder to pick the react and react DOM. Now we are passing the module, and under the module there are the rules आप पास कर सकते हो. राइट नाउ आई एम यूजिंग द लोडर एज अ TS लोडर, विच इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट? टू ट्रांसपाइल योर कोड, राइट? आई हैव थॉरली एक्सप्लेन दिस TS लोडर, बेबल लोडर, couple of other loaders inside my Webpack video, right? You can check it out, that particular Webpack video, right? Now I'm not talking about the define plugin. Inside the plugins, now you can pass the module federation. Here comes the actual idea of the module federation, right? So what is the name of your module federation? This is an app shell. Remotes के अंदर आप पास करते हो. ओके, आप किस नाम से एक्सेस करोगे अपने चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड को? मैंने यहाँ पास किया shared underscore header. Now if I will take you in the app.tsx, आप देख सकते हो मैंने shared underscore header यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ ना. अब आपका क्वेश्चन आएगा ये स्लैश हेडर ऐप कहाँ से आ रहा है? लेट्स गो बैक टू Webpack config. ओके, नाउ आई एम पासिंग रिमोट्स के अंदर, अगर मैं शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर लिखता हूँ और यहाँ पे शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर, यहाँ पे ये वाला URL पास हो जाएगा. ऐसे करके आप इसको एक्सेस कर लेते हो. यही है ना रिमोट शेयर्ड हेडर का URL, राइट? हमारा ओके. सो बेसिकली इफ मेरे को इन्वायरमेंट से नहीं मिलता तो ये वाला पाथ जाके सेट हो जाएगा, काइंड ऑफ. अगर हम बोले तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट? इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने चाइल्ड माइक्रो फ्रंटएंड को एक्सेस कर सकते हो अपने ऐप शेल के अंदर. और अगर यही केस आपका इन्वायरमेंट का होता, सिस्टम, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट, सो सेपरेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके CI/CD के अंदर सेट होते, मीन टू से आपके गिटहब के अंदर, या आप किसी भी तरीके से अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लेके आते जो रीड करते, जो आपको यहाँ पे आपके child micro frontend का path provide करता. Okay, I'm just reverted back. So we have already set this path, a local path, right? So now next step is shared में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि react और react DOM का जो वर्जन है वो 18.2.0 ही लेना है, और रिक्वायर्ड वर्जन यही है. और अगर मैं आपको इसकी Webpack कॉन्फ़िग दिखाऊंगा तो उसमें भी ये पास किया है, ताकि जो हमारी शेयर्ड लाइब्रेरीज है, मीन टू से रिएक्ट और रिएक्ट डॉम के वर्जन कंसिस्टेंट रहे, पैरेंट एप्लीकेशन के अंदर भी और चाइल्ड एप्लीकेशन के अंदर भी. ये तो HTML Webpack plugin है, which is in a template which we have copied into the public index.html. We have created the index.html inside the public folder. Now let's jump to the Webpack config. But before jumping into the Webpack config of the shared header, कीप इन माइंड दैट अभी हमें ये पता नहीं है कि app.tsx के अंदर ये हेडर ऐप मैंने कैसे डाला है, ठीक है? सो वी विल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग टू यू द Webpack config फाइल ऑफ दिस शेयर्ड हेडर 1. इसमें भी सिंपल है, मैंने पाथ रिक्वायर किया, Webpack प्लगइन यूज़ किया, मॉड्यूल फेडरेशन किया. स्टैंड अलोन का मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये स्टैंड अलोन क्यों पास किया था, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं. यहाँ पे हमने अपनी एंट्री फाइल डाल दिया bootstrap.tsx. आप देख सकते हो bootstrap.tsx के अंदर वही है जो हमारा document.get element by id root जो हमने डाला हुआ है, राइट? अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की. वही अगर नोड इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन ले ले, किस पे एक्सपोज करेगा? 3002 पे इसका डेव सर्वर रन होगा. आउटपुट आपकी डिस्ट में जाकर बनेगी. रिजॉल्वर में मैंने वही लाइब्रेरीज बता दिया भाई, तो नोड मॉड्यूल से रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को उठा लियो. एक्सटेंशन में TSXJS मैंने डाला है, TS लोडर डाला है. मॉड्यूल फेडरेशन में इसमें मैंने नाम अपना शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर डाला है, उसमें मैंने ऐप शेल डाला था, इसमें शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर डाला है. फाइल नेम मैंने क्या डिफाइन करी है? रिमोट एंट्री डॉट JS, राइट? ये इन मेमोरी में ये रिमोट एंट्री डॉट JS क्रिएट कर देगा. अगर आप यहाँ पे चलोगे ऐप शेल वाले Webpack कॉन्फ़िग के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड को. यहाँ रिमोट्स में अगर मैं पास करूँगा तभी तो मैं
इन माइक्रो फ्रंटेंड्स को अपनी पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पाऊंगा, राइट। अगर मैंने रिमोट्स के अंदर बोला ओके, जो मेरी पेरेंट की वेबपैक कॉन्फ़िग फाइल है उसको मैंने बोला रिमोट्स के अंदर शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर डाल और एक्सेस कर इस यूआरएल को, राइट। अब इससे क्या होगा, ये अपनी app.tsx में इसको यूज़ करना शुरू कर देगा, हेडर ऐप को लोड कर देगा, ठीक है। अब मैंने हेडर ऐप को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये हेडर ऐप कहाँ से आया, वेबपैक कॉन्फ़िग में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सपोज किया इसको ./हेडर ऐप और उसके अंदर क्या पास कर दिया ./source/हेडर ऐप। इससे क्या हुआ, इसने मेरे इस हेडर ऐप के कंपोनेंट को पिक करना शुरू कर दिया, ठीक है। शेयर्ड में मैंने आपको बताया था कि 18.2.0 रिएक्ट डॉम ये सब कुछ यूज़ करना है, और HTML वेबपैक प्लगइन में index.html जो भी है हमने यहाँ पे index.html पब्लिक फोल्डर के अंदर रख दी थी। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं global.d.ts, ओके। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक global.d.tsx बना दी है, ठीक है। क्लियर मॉड्यूल, क्या मॉड्यूल बनाना है मेरे को, बनाना है अपना शेयर्ड अंडरस्कोर हेडर स्लैश हेडर ऐप, ओके। यहाँ पे हमने ये कर दिया मॉड्यूल डॉट डिक्लेयर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कॉलन एनी, ओके। हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे हेडर ऐप कॉलन एनी कर देंगे और हेडर ऐप को हम ये कर देंगे, और यहाँ पे हम एनी की जगह चाहें तो रिएक्ट डॉट एफसी भी कर सकते हैं, okay. So now if you'll see that in your app.tsx error has been gone, right? Okay, the global.tsx, okay, मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लूँ, shared header app, yes, fine, cool, okay. So we have declared it in the package.json. Let me check the react version, okay. So there is a confusion, package.json, okay. So what I'm going to do is, जो मेरी डिपेंडेंसी है ना उसमें मैं जो अपने पैकेजेस है ना इनको कंसिस्टेंट रखूँगा 18.2 और 18, और जो हमारे रिएक्ट डॉम और ये है टाइप्स रिएक्ट है इसके वर्जन्स को भी एक बार चेंज कर देते हैं, ठीक है। 18.2 ये, और एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ इन द शेयर्ड की package.json के अंदर भी यहाँ पे मैं पैकेजेस को चेंज करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने वेबपैक कॉन्फ़िग के अंदर वहाँ पे डाला हुआ है कि भाई जो पैकेजेस हैं उनके रिक्वायर्ड वर्जन यही है 18.2.0, वहाँ पे मत जाना इनकन्सिस्टेंट वर्जन पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को, नाउ आई नीड टू रीबिल्ड इट, ओके। दिस इज I am just going to delete the package.log.json for both of these projects. Okay, let's go back to this dir. Okay, clear dir npm install again, because we have changed the react dom version, and what happened, added 3 packages, did it create it? Added 3 packages, changed 5 packages, okay. I'm assuming it did it. Dir cd shared header dir, okay. Now npm install again, okay, it did it, okay. Go inside the package.json right now, comma star, okay. So I'm just saying, okay, for when we run the npm run start or the yarn start, it will do the webpack server, right. It will pick the webpack config file.js, okay. Now for the building, what it's gonna do is webpack -config webpack config.js, right. And one more thing that I missed it, I believe we are passing the eager true, right. Eager true is required, you can pass it as a false as well, but if what happen is, like, if you run your app shell application, right, if you will make your child micro front-end webpack config eager to be passed, so what happen is, like, when you run your parent application, your child application will break. The reason why it is break,
because child application needs a React and React DOM first, right? But if you will make it eager as in a false, so when you run your parent application, this packages will not be available, so it will break your child micro frontend. So that's why you need to pass the eager true over here, right? If you want your but there is a problem as well. So if you will make it as an eager colon true, then in that case, so what happens is like so there is a two things, right? Let's understand. If you will pass the eager colon true, if you run your child micro frontend independently, then only it works. Otherwise it will not work. Because if you will make it as a false, so when you run your application, right, it will break it. It didn't get React or React DOM, and it start running your application and it will break it. But in case of parent, if you will make it as a false anyway, the parent will work, because the parent loads the React from itself, right? It load. So whenever the child micro frontend will load, it already have the React and React DOM because of the parent application. So that's why it works. But in your child micro frontend, if you want your application to be work independently as well, then make this eager true. So what you can do is you can create a one variable which is a standalone variable that I have shown you earlier as well inside your package.json. For the independent project, you can make it as an eager true, but for your production application, you can make it as a false. The reason why I'm saying is otherwise what happens is that the React and React DOM will be part of your main bundle, so it will increase the bundle size. To reduce the bundle size, what you can do is for the production, make it as a false, right? But for the pre-live environments or for your local development, make it true, right? So now the thing is like we are done with a couple of things. Now in the package.json, here we need to add the scripts, right? Start colon webpack, okay, build, okay. Now what we are gonna do, cd, okay, yarn start. Let's see क्या करता है, एक बार देख लेते हैं. Okay, you cannot resolve index.html. Okay, what it is doing, module not found. Which module not found? Okay, index.html, ODMF shared header public. Okay, I did a mistake. I believe I did a mistake. The public, there is a source folder, right? Module not found, error, cannot resolve this in the public. Okay, child compilation fail हुई है. What it is calling, error child compilation in the shared underscore header. See, module not found, error है, cannot resolve public slash index.html. okay, इसको मिल नहीं रही है index.html somehow. Let's see, in the webpack config file where it is looking dot slash, okay, I did a mistake. I need to keep my folder over here. Okay, so I am just moving this folder from the source, right, which I did mistakenly created inside the source. So what you need to do is you just create your public folder inside the root directory, not inside the source folder, which I did a mistake. So we need to take care of the mistakes as well. Now run it. Okay, now successfully run it. Now I'm clearing it. What I'm going to do is what I did is yarn start. Okay, yarn start, npm run start, whatever you want to do. So now let's see. Now you can see that, okay, hello from the shared header remote app. Okay, let's take an example. Do one thing. Let me okay, I hope all the screens are visible to make it more effective. Okay, so what I'm going to do is I'm in my shared header webpack config, I'm making this eager as a false. Let's see what happened. I'm doing yarn start again. Okay, now things broke, right? Now you can see that it started, the shared module is not available for the eager consumption. Now you understand, right?
आपकी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको रिएक्ट और रिएक्ट डॉम चाहिए। अगर आप ईगर ट्रू कर दोगे तो यहाँ पे आपको वो पहले लोड हो जाएगी, आपकी रिएक्ट और रिएक्ट डॉम भी अवेलेबल हो जाएंगे जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईगर। when we will run the parent application, in that case we will make it as a false। जब हम अपनी parent application को run करेंगे तो मैं आपको इसको false करके दिखाऊंगा, बट parent application जब run करोगे अगर यहाँ पे ये false भी होता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न है parent application already react और react DOM आपके लिए लोड कर चुके हैं, then you don't need it। but doing the eager true, it should be the part of the main bundle। so that's why for the pre-live और live प्री-लाइव इन्वायरमेंट्स पे अगर आपको आपकी एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली भी रन करनी है, राइट, और एप्शेल के अंदर भी रन करनी है, देन यू कैन मेक इट ईगर ट्रू। बट फॉर द प्रोडक्शन स्पेसिफिकली यू कैन मेक इट एज एन अ फॉल्स, सो द प्रोडक्शन बंडल साइज शुड बी रिड्यूस्ड, राइट। सो लेट्स डू द अनदर थिंग्स, राइट। नाउ इट्स टाइम टू run yarn start again। okay, now I have started yarn start। let's see the output। okay, hello from the shared header। let me zoom it more। okay, so you will see the this application that we have built. This is a child micro front end that we built. Now what I'm going to do is I'm just copying the path, go here, dir cd app shell dir। now what I'm going to do is yarn start। let's see अगर ये बिल्ड हो जाता है या ये भी कोई एरर देता है हमें फर्स्ट इंस्टेंस में। ओके, दिस हैज़ बीन ऑल्सो बिल्ड। नाउ यू कैन सी दैट योर ऐप होस्ट ऐप शेल की ये आपकी पेरेंट एप्लीकेशन है। पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर आप अपने चाइल्ड माइक्रो फ्रंट एंड को कॉल कर रहे हो, राइट। सो नाउ द थिंग इज़ लाइक, अभी मैंने यहाँ पे एक पेरेंट एप्लीकेशन बनाई। अब इस पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर आप एक अपना हेडर बना लो। आप इस मतलब शेयर्ड हेडर के अंदर आप अपना हेडर बनाओ जो आपकी पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना एक कंटेंट सेक्शन बना लो, आप अपने फुटर बना लो, फुटर की अलग माइक्रो फ्रंट एंड रख लो, किसी भी चीज़ का रख लो। So the idea is basically we create a two application, one is an app shell, second one is in a remote app। in the remote app what we did is we expose our header component which we get inside the parent application using localhost /3000 remote entry.js, and the same component which we are getting here in the remotes, what we are getting using remote shared underscore header, we are using inside the app.tsx। I hope this is simple, very simple process to create a micro front-end app application using the module federation। in the next session we will definitely do the we will implement this solution, mean to say we will build this solution using the CI/CD, using the GitHub action। I will create a detailed CI file, CD file, for CD deployment purpose we will use the Netlify। I will tell you how to create the sites on the Netlify, how you can create your YAML files to automate your build process, test process inside your GitHub actions। so that session will be the amazing one, you will learn a lot। the reason why I'm just creating this series, so in your organization I've seen that couple of times when we joined, even a seniors join, because you can think like that, daily when we works in our organization we didn't get enough time to do the things, right। so we daily build the components and all। when we switched and we gave some interview, then people ask, okay, did you ever create any framework? if you say no, I didn't create any application from the scratch, even you didn't create it, actually people lied, right? they said yes, I created it। so the person who is in front of you asking you did you create it comes under the confusion, okay, this guy don't know, so we will use him as an individual contributor, not act like as an architect, or not, we will not use it like so you will not become the valuable assets for your organization if you will only try to build these components, right? that can be built by anyone, even the Copilot, Chat GPT, you can generate anything within a seconds, right? you can even generate these things as well। at least we should, as a front end or as a back end, as the system design, we should aware about the concepts, right? if you are aware about the concept, then no one can stop you, right? so
If you really like the session, then please click, hit like and subscribe. Next session will be the amazing one. We will go through the CI/CD, GitHub Actions, Netlify things. We will create the individual CI file, CD files. We will create a one file to achieve the CI/CD. We will create a separate files to achieve the CI/CD and everything. So I will show you the GitHub interface. So that session would be the amazing one. So be with me. Thanks for be with me in this session. If you really like the session, then please click, hit like and subscribe. Thank you everyone. 2 comments. Thank you.